Today we are in Jaipur, and I'm very excited to have this podcast. Independence Day hai, and I'm with royal family of a place called Shahpura. आज हमारे साथ हैं अधिराज सर, and Adhiraj sir is the owner of Shahpura Group of Hotels. बहुत कुछ जानना है हमें कि how our royal family runs our palace hotels. इनके पास काफ़ी सारे hotels हैं और ये इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम बना चुके हैं ऑलरेडी इंडिया लेवल पे. सो लेट्स हियर द एंटायर जर्नी स्टोरी फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ. अधिराज सर, हाउ आर यू? I'm good, thank you so much Prashant ji for a lovely introduction. इंट्रोडक्शन बहुत छोटा था सर, काफ़ी बड़ा हो सकता था. नहीं छोटा इंट्रोडक्शन काफ़ी है. So I'll start with the journey of Shahpura Hotels, how it began. So 1990. पर शाहपुरा से पहले मेरे को ये जानना है सर, शाहपुरा आप मेरे को थोड़ी लेगेसी अगर बता पाएं शाहपुरा. What is शाहपुरा? लोगों को बहुत जानना है. So basically Shahpura is a town which is between Delhi and Jaipur. From Jaipur it's around 65 kilometers towards Delhi. तो छोटा टाउन है. हाँ, it was a village earlier, but आपने अगर शेखावटी नाम सुना है, the शेखावटी area. So the head seat of शेखावटी area is Shahpura. Okay. Shahpura is the head seat of the Shekhawati region. Okay. So under Shahpura, there are almost around 65 villages. Okay. So that comes under Shahpura. Yeah. So my father's elder brother, he is the head of the Shekhawats, all the Shekhawats. Okay. In Rajasthan. Okay. Yeah. So he was the elder son of my grandfather. So आप लोग वहीं पे पले बड़े हुए हैं? So I mean, we were born in Jaipur, but we used to travel to Shahpura quite often. Okay. So that's a legacy that has came in with. So this was the residence when my grandfather used to travel to Jaipur. So this was a small residence. Okay. He used to stay here. This is a small residence. नहीं, अब तो बाद में बड़ा है उसके बाद. But initially they were basically 2 plots. Okay. So it was a residence where the family used to stay initially. So then later on he passed at a very, very early age. He was into politics. My grandfather, he was an education minister. Oh. Yeah, from Congress. Okay. So he met with an accident and he passed at an early age. Then my grandmother, she joined politics. Okay. That time it was Janata Party in 77. So no Bharatiya Janata Party? It was just Janata Party. Okay. So 80 में सरकार गिर गई थी. So then she left politics because my father, my buas, they were all very small. Okay. So then she decided to handle the family. And then later on my uncle, he joined politics. Okay. And then in 1990, my father, he used to do stock exchange in Mumbai. He was a stockbroker. Okay. हाँ. So he came back and उनको वापस बुला लिया था कि you come here and you handle all the properties. थोड़ा यहाँ पे भी आके देखो क्या है. Okay. So then he thought of opening a small guest house in 1990. And that guest house was this? This was this. That was earlier known as Shahpura Guest House. Okay. So ये चालू हुआ था 1990 में with 3 rooms. And this was the first initial start of Shahpura hospitality. Okay. So 1990 mein it was started and my mother and my father, they were both looking after it. Okay. Starting from the reception. आप लोग तब? नहीं, my brother he was born in 1990. Okay. I was born in 91. तो वो 90 में he was born. So reception से लेके housekeeping, F&B सब वही देखते थे. Okay. आपके father and mother दोनों देखते थे. Everything. Even going to the station, I remember he keeps telling us the stories कि हम कैसे गेस्ट को लेके आते थे स्टेशन पे, जाके स्कूटर पे बिठा के लाना. ऑटो उस टाइम तो ऑटोज थे, कैब मतलब ये गाड़ियाँ टैक्सीज तो नहीं थी, तो ऑटो वालों को कमीशन देके वहाँ पे गेस्ट को लेके आना. So these were all stories, and that time he used to tell that he used to rent out a room for, you'll not believe, for 180-200 rupees. This was the room rent that time. And तब भी foreigners आते थे सर? आते थे, foreigners आते थे. Less, but there were a lot of Indians traveling for long stays. Okay. For Jaipur. For Jaipur. तब Jaipur develop हो रहा होगा उस टाइम पे. So and how you grew up with this hospitality around you? So I entered this business in, I think when I passed out from Christ. I did my graduation from Christ in Bangalore. So after doing that, I thought I'll do a post graduation in family managed business from Mumbai. So then I thought I'll start looking after the business and I'll learn what is there. So that was, I think it was in 2014 or 15. Okay. I entered this, and from when I entered this business, I started looking after the F&B part. Okay. So
while you were growing up आपके सामने होटल चल रहे थे, your father was managing, mother was managing होटल, हाँ आपको कभी ऐसा लगता था कि आगे चल के मेरे लिए ये बिजनेस आई हैव टू टेक केयर, या ये सडनली रिस्पांसिबिलिटी दी गई है? वाज इट अ नहीं फोर्स? नहीं नहीं नहीं, it was never a force. I wanted to work, I wanted to do a job, but then I thought कि ये है तो let us इसके अंदर ही कुछ ना कुछ करते हैं. Why to पर do a job? हॉस्पिटैलिटी एक्सपोजर बचपन से ही था आपका? हाँ, hospitality exposure बचपन से था. Yes. We stay here, so whenever we used to go out, we used to see people coming in, staying, foreigners coming in, guests coming in. So वो तो हम देखते रहते So, थे. बचपन से हॉस्पिटल आपने कोई स्टोरी याद है जो बचपन में आपने पार्टिसिपेट किया होगा फादर मदर के साथ रनिंग अप द होटल? नहीं, बचपन में तो I think we were kept away from all these things. We were only told to focus on studies, yeah, which eventually we couldn't do. We were very bad, both me and my brother. Me too. So yeah, 2014-15 I entered in this business, and I was in F&B. I was taking orders that time. Oh, you took orders? Yeah. Okay. I was not sitting on a chair or handling it. I was going to the tables, taking orders, managing all the guest requests, taking care of the groups, FITs. तो F&B में थोड़ा सा एक liking थी, एक interest था, तो वहाँ से start हुआ था. Menus बनाना, breakfast देखना, guest के पास. F&B शुरू से आपका डोमेन था? हाँ, I went to them. I used to go to them as an employee, not as an owner also. कि उनको लगे नहीं कि भाई owner ही आ रहा है, because otherwise they will not be what they are. हाँ, experiencing also. So it was nice. So and then later on I went into sales. Okay, you started sales. I started sales and marketing. So we had a company whom we had tied up for offline sales. So I used to tie up with them and I used to go on sales calling. Okay, so जब आप when you were like handling the F&B sales, तब कितने होटल हो चुके थे? नहीं, that time we had only this property, Shahpura House and Shahpura Haveli. And Shahpura House बड़ा हो गया था तब तक, तीन कमरे से? हाँ, 2015 में we added the next block. So that time we were 62 rooms. उससे पहले 38 rooms. And ये completely आप लोग के आपके हाथ में कब आया? Because आप और दिगराज सर इसको completely अब चलाते हैं. So like when did you thought कि now this is enough time and now we should expand this entire business? So I want to know when Shahpura started expanding. I think in 2018. Very recent. 17 or 18, this thought came to me and my brother that let us start taking other hotels on revenue sharing, lease module, and have another company apart from this. So then he started going to various places and exploring the hotels. So he was the one who first saw the Kumbhalgarh property. Oh, so Kumbhalgarh was Kumbhalgarh was the first property which we took on lease. So that was the time when Shahpura Hospitality came into the picture. Okay. So from there till now, how many hotels that you have? Now currently we have got 10 hotels. 10 already. 10 hotels. Yeah. And this is like 2018, and now we're sitting in 2023. 23, yeah. So COVID was the best time, when we could tie up with the hotels. Because आप तो you are very much aware of the COVID के टाइम में बहुत सारे लोग डरे हुए थे कि कभी people who were the hotel owners, they were quite fed up and they couldn't sustain themselves. उनका daily का जो भी खर्चा है वो नहीं निकल रहा था. So that was the time best to project ourselves to them to take that hotel on, and they got a fixed revenue. हाँ, उनको लीज मिल रही है, उनका टेंशन खत्म हो गया. वो खत्म हो गया. So COVID was the best time, so we got good deals. So अभी what is the mindset right now for Shahpura? Are you expanding more, or you want to sustain what you have already built? No, definitely we have to sustain what we have got in our bucket, but now we are planning to move out of Rajasthan also. We're trying to penetrate this Himachal side. Okay. Because when in summers, Rajasthan is it has got off season होता है यहाँ पे, और वहाँ पे peak season होता है. So that is a good strategy which we can always move the staff also. Yes. both season में फिर we can have a command. इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है, if you are a bigger chain you will never face a losses. कहीं पे सीजन है तो कहीं पे नहीं है, and this is always there in India, but it's not like a monochrome कि आपका अगर सीजन नहीं तो पूरे इंडिया में नहीं है. And apart from that also we don't want to go with a bigger inventory. Okay. We want to have a smaller inventory with a boutique touch. So what's the reason behind why you want to go on a smaller inventory? Because that is one, it is easy to manage. Okay. And then you have got a lot of things to do in that. See, if you have a bigger inventory, so you'll end up giving it up for marriages or something. Yes. Events. Yeah. So you don't have anything to do apart from that. Correct. कुछ आपका small inventory, so you have got a lot of things to explore. But I think smaller inventory gives you less profit
but versus the bigger inventory, जो Yeah, 200 like definitely. Novotels and Marriott, they build anything between 150 I mean, 200 homes. they'll give you more sales, not Yeah. profit. See, profit depends. क्या आपका वो क्या है? No, What is the percentage may be lower, but Yeah. the volume is high. Yeah, So volume is high. smaller hotel might give you 40% ka GOP, and 5-star hotel of a Marriott of 200 rooms can give you a 28%, True, 25% true. GOP, but the volume is high. Volume is high. That So, is true. but so Shahpura would be a boutique chain only. That's what the intention is. Yeah. We'll not go with the bigger inventory. We'll remain as a boutique heritage Property. Yeah. So, So we have also bifurcated our brand. Okay. So you must be knowing that residencies, palaces, and Yeah. heritage. So all of these are boutique. All of these are different. Like residencies are all the contemporary modern hotels like our Shahpura Residency. Yeah. which is Business like- traveler, targeted to business travelers. targeted to business travelers. Then we have got boutiques. So boutique, in that boutique you can Shahpura Udaipur Barlia's house is a boutique property. Dev Panache is again a boutique property. Correct. So now we have come up with Wilderness. So the Sariska property comes under that. Yeah, I think wilderness is booming right now in India because this looks like a future of travel when people are looking for going to closer to nature. So earlier it was Goa, Himachal, Kerala. Now they are Wildlife becoming, is coming Yeah. into place now. Yeah. That is true. and a lot of players are targeting it. It's like bigger brand like Taj, Oberoi's are also targeting these areas. So आपको लगता है फ्यूचर में ये भर जाएगा ये वाला एरिया भी, जंगल्स को भी हम नहीं छोड़ेंगे? In fact, आप राजस्थान में अगर if you talk about, so there are apart from Ranthambore, there's hardly any other place where you can now see Jamai is picked up a lot. Yeah, Jamai is picked up a lot, much better than Sariska in terms of sighting. sighting, correct. Jamai में we have got 200% sighting. So that is good. And there are few more other, even Kumbhalgarh now they're planning to have tiger. अच्छा, they're bringing it. They have a sanctuary, but now they'll be putting tigers in that. Okay, so there will be a sighting purpose as well for people. Even to in Jaipur, you've got Jalana. Jalana, yes. So every small city where there's a scope, so the government is trying to promote wildlife. And how many hotels that you are looking at to end this 2023 with? See, I think 23 we'll have another. We'll keep this number and we'll have another 3 or 4 more hotels. Okay. So you want to sustain this for this year? Sustain for this for now, yeah, because see the inbound has again started. So this year the inbound will be, the tourism will be nice as far as inbound is concerned. Correct. So we need to sustain this year with what hotels we have right now, and then maybe 24 we can think of adding 4 or 5 more hotels. Not in Rajasthan, but especially we are also looking up for a property in Javai. Okay. Yeah, a small property because that is good from especially from travelers coming from Gujarat. So what are the are you planning to go towards south of India, or you want to cover the northern part of India? No, we'll cover the northern part first. And then northern. So what is the purpose end goal of Shahpura, if you have to describe it today, that this is what I see Shahpura 5 years down the line? This is the brand that we are building, and this will be the identity of Shahpura hotels. See, down 5 years down the line, we'll be focusing on having what hotels we have to sustain them and to add more hotels. In, as I said, Himachal mein we want to add at least 3 hotels over there, especially in Rishikesh. And then this side of UP, Ayodhya is quite coming up. Yes. So another hotel over there, which is unexplored right now, but in future times it will be a very good destination. So all in all, if I can say that it will be one of the best boutique chain in India, because you are covering length and breadth of India. You're going to pilgrimage. So the best, I think the travelers will only let's leave that to the travelers to judge that. But yeah, we'll of course we'll focus on giving the best of hospitality, what we can. So if you have to compare today, Shahpura को अगर हम किसी से साथ compare करते हैं, suppose like you are building a boutique brand, there is Tree of Life, there is another few small brand postcard hotels who are into this boutique segment now, and I will not name it, but there are a few more coming into this boutique segment. So do you think that you have an overedge with the competition coming into this segment, because now people are moving into the smaller inventory? Yeah, that's true. Tree of Life, आपने जैसे you shared an example of Tree of Life. So I think Tree of Life, they are taking hotels quite fast. That's what I have learned. Yeah. And quite a lot of hotels are
deflagged also. Correct. Which I got to know recently, even in Udaipur and I think Ranthambore also there. So I don't know what strategy they are at, but see, we don't want to deflag our hotels what we have taken. Okay. That gives a little bad impression in the market. You know that. So we are very choosy when it comes to pick a hotel. First we go see the property, everything, even the BOQ of the property, the back area. You do a thorough study of the property that all our kitna lamba chalegi and what are the equipments and how good the hardware it is. The hardware. Okay, I think one question that I would like to know more about Shahpura Group is what is Shahpura Touch? So once you take a hotel on lease, how does it become Shahpura? Become Shahpura. See, we have got a photo frames of our family. You must have seen here also. Yes, I have seen in all the properties. So first of all, we put that the family legacy, which what we have of our ancestors. So that is placed in all the hotels which we take, and then when whichever hotel we take, so we start staying there for quite a number of days. So automatically that touch comes. So you build that hotel completely again, so refurbish or renovation? Not completely, but some parts, as in maybe the frescoes, the paintings, the interiors. Interiors, yeah. So if I walk into any Shahpura hotel, it will give me a feel of Shahpura as a legacy. Yes. That's the touch of Shahpura that we follow. And how do you manage all of this hotel completely? Have you built a team behind it, or you are involved in daily operation, or is it that you have a set of people who are doing it for you? No, we are ourselves involved in the day-to-day operations. Okay. And then we have got we've got a team which is quite old, so we keep moving them from different hotel to hotel as per the requirement is there. Okay, so the experienced person goes and open a new hotel. They Correct, do a setup and then so we have got a suppose example the maintenance, the engineer team. So we have got a set of engineers. So they travel whenever we are signing a hotel. So they take the handovers. So they check everything. So then apart from that, then the F&B team goes, the front office. So you have a pre-opening kind of a team which goes and set a hotel for you. Yeah. Okay. So 4-5 years now, if I look at the expansion mode was on. What is the feeling right now? What you have built? So आप जब खड़ोगे देखते हो यार एक से शुरू किया था ये यहाँ पे खुद ऑर्डर लेता था मैं versus आज मेरे पास इतने होटल हैं. What is the feeling? I want to understand the feeling. What it comes when you build something like this. No, the feeling is definitely nice when we especially go to the fairs and when we display our products. So people also the new Shahpura brand as only Shahpura House. Yeah. And now when they see the whole portfolio, so they are also happy that we are expanding and we have now a number of hotels. So it feels good. How does it resonate with your father, with you? Because he was the initial person to start. Now you guys are making it big for him. No, he's definitely quite supportive and he's never let us. He's never refused us to take any decision. So he says that if you will not take any decision, you'll not come to know whether it is right or wrong. Yeah. Great. So in that case, he's given us a lot of freedom. So whatever we do, we learn from that. So that is what his mentality end goal was looking at that. Is he proud right now or not? Yeah, definitely. He is proud. I'm sure he would be. Okay, so I think we have talked a lot about Shahpura. Let's understand the royal families and the hotel business. So in entire of the Rajasthan, sir, मैंने जहाँ तक जितना भी देखा है और जितना भी पढ़ा है, so दो चीज with royal family is fixed. One is politics, other one is hotel business. ये क्या चक्कर क्या है सर इसका? ये प्रशांत जी इसका चक्कर ये है कि जो रॉयल फैमिलीज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे हैव इनहेरिटेड द properties from their ancestors. So basically they are the custodians. So they are whoever has inherited the property is a custodian till the time he is handling it. Correct. उनको उस प्रॉपर्टी देखभाल करनी है. अब वो उस प्रॉपर्टी को उसको कमर्शियली कन्वर्ट करके एक हॉस्पिटैलिटी एक होटल के अंदर अगर चालू करते हैं तो उनके लिए अच्छा है, बिकॉज वो प्रॉपर्टी नहीं तो मेंटेन भी रहेगी, नहीं तो वो एक मतलब go into ruins. So that is good because that is a plus point coming from a royal family because everyone has inherited something or the other. Yes. So to now make that place, suppose cities are different. City business is a different thing. So if you talk about Shahpura, so no one knows that.
शाहपुरा इज नॉट अ डेस्टिनेशन इन द टूरिस्ट सेक्टर. Yes. कोई नहीं जानता शाहपुरा क्या है. क्या जैसे है? आपने पूछा कि शाहपुरा है क्या क्या. है हाँ. क्या? Yes. तो उसको डेस्टिनेशन में डालने के लिए यू नीड टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स कि भाई शाहपुरा गेस्ट आके क्यों रुके. क्योंकि जयपुर अगर 65 किलोमीटर ही दूर है तो हम तो वहीं ड्राइव डाउन कर देंगे. बिल्कुल. तो आपको फिर बताना है कि व्हाट एक्सपीरियंस यू गिव इन शाहपुरा. ऐसा क्या कराते हो आप शाहपुरा में कि गेस्ट वहाँ आके रुके. So the property becomes the experience. हाँ, तो वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. And because you come from a royal family background, your connect with the local audience. Local is is high. good, yes, definitely. And that's the reason politics come in place. Politics come in place, definitely. That is also there. So Shahpura ke andar bhi we have got the people are there. So whenever they see a traveler, so they welcome them like they are seeing us only. You know, so that touch is there. अगर कोई और जाके कुछ वहाँ पे अगर कुछ करे तो आई एम श्योर वो चीज आई थिंक वो उनसे नहीं मिलेगी. Yes, उनसे इतनी नहीं मिलेगी. This what I think. And मेरे को सर ये myth है या truth है, मेरे को आपसे ये जानना है that जितने भी लोग रॉयल फैमिली से आते हैं, if there is a property, they are very there is big no to sell those property. They will keep it because it's a part of their legacy. They will not sell it. एंड उसको मेंटेन करने के लिए चाहे उसे होटल कन्वर्ट करना पड़े या मैरिड बनाना पड़े या ओबराय बनाना पड़े, बट दे विल नेवर सेल इट. वो मैरिज हो पा रही है, इफ यू डोंट हैव टाइम, बट यू विल कीप दैट प्रॉपर्टी. इज इट ट्रू? दे विल नॉट सेल इट. या हां, आई एम श्योर व्हाई दे विल सेल इट, बिकॉज़ एक उनकी नाक की बात हो जाती है ना फिर. हां, ये सेम चीज. वो कभी भी मेरे ख्याल से वो इफ यू हैव अ इनहेरिट प्रॉपर्टी यू विल नेवर सेल इट व्हेन इट कम्स टू रॉयल फैमिली. हां, दैट इज ट्रू. बट अगर आप उसको सेल नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट यू नो यू शुड गिव इट टू सम चेन और जो अभी जो यही कर रहे हैं सर. some brand so that they can run that property nicely और आपकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन है अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो. करेक्ट. कई हैं मतलब there are a lot of examples where the properties are nothing, no one has done it, but there's a lot of potential. Correct. So in that case they should give it to some brands, chains. एक इंडिया का charm है सर when it comes to palace properties, and I have seen a lot of foreigners getting mad about this entire thing. And शाहपुरा हाउस में हमने बहुत फॉरेनर्स देखे हैं. हमने रामबाग पैलेस की बात करें, जितने भी पैलेसेस हैं, दिस इज चार्मिंग फॉर आउटसाइडर बिकॉज इनके लिए ये बहुत अलग चीज़ है टू कम एंड एक्सपीरियंस द पैलेस while it has been converted into a hotel. Do you think this charm will continue for very long time और ये थोड़े दिन बाद खत्म होगा because urbanization जितनी जल्दी हो रहा है? नहीं, आई थिंक प्रशांत जी ये चीज़ हमेशा रहेगी. क्योंकि मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर कोविड आया तो उसके बाद जो स्पेशली हमारी जैसी जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं वी गॉट लॉट ऑफ बिग स्पेस इन टर्म्स ऑफ लॉन्स एंड वी कैन ऑर्गेनाइज वेडिंग्स. सो दे हैव गॉन टू अ डिफरेंट मॉड्यूल. सो दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेडिंग्स, इवेंट्स. तो उस केस में क्या होता है कि जो एक इनबाउंड ट्रैवलर है तो उसके लिए ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं. So he wants to stay when he or she they are coming to Rajasthan. They don't want to stay in modern hotels because दूसरी जगह वो modern मिलता है. So they want the experience of a heritage palace. आपने जैसे कहा कि home boutique home where the महाराजाज used to stay. तो वो experience उनको ऐसी प्रॉपर्टीज में मिलेगा जहाँ ये वेडिंग्स का डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो ये चीज तो ये सदाबहार रहेगी. और पैलेस का अपना अलग टच है एक वो आपको फील देता है होटल के अंदर घुसते ही दैट यू आर इट. अब यहाँ पे आप इमेजिन करो कि एक वेडिंग लगी हुई है तो वो फील नहीं आएगी. बिकॉज़ इट विल बी क्राउडेड फिल्ड. आप मतलब शादी में मतलब मैं शादी को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको. मैं शादी में ये समझता हूँ सपोज इफ आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड आई वर्कड हार्ड एंड रीच सम पोजीशन. आज मैं एक 5 स्टार होटल में शादी कर रहा हूँ पर मेरे रिश्तेदार अभी भी वही हैं. दे विल नॉट नो हाउ टू be attired when you come to 5-star hotel या आप खाना कैसे खाते हो. पर वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं they are coming to 5-star hotel. तो आपका पूरा माहौल खराब हो जाता है when it comes to wedding, Indian weddings happening at a place which should not be there. I think ये एक situation है business की वजह से हम उसकी status को खराब करते जाते हैं. And that doesn't happen in palaces. That doesn't happen because every property has उसका एक खुद का charm है. So that should not be changed or harmed. But COVID के time में there was no option. किसी के पास नहीं था, सबने किया. COVID was the time then that first time we started doing weddings. हमने आज तक कभी यहाँ पे And how was your experience in the wedding? बहुत अच्छा था. मैंने खुद में मेरी शादी यहीं से कर ली. So आपकी शादी यहीं से हुई थी? हाँ. Nice. So we got a good experience. So we thought let us save some money. So we did my wedding from here only. I think एक
न्यू ट्रेंड है जो मैं अभी देखना शुरू किया है, बिकॉज लाइक व्हाट वी डिस्कसिंग कि पैलेस का अलग चार्म है और ये कभी नहीं जाएगा, एंड लोग इस तरह के होटल्स को हमेशा पसंद करेंगे जब भी राजस्थान का नाम आएगा। यस, अभी राजस्थान में लोगों ने सर ब्रांड न्यू होटल बनाने शुरू कर दिया पैलेस के जैसा, बट वो बेच मतलब वो अपना उसको प्रॉपर्टी को सेल किस में कर रहे हैं आप वो देखो। वो एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग इट इन वेडिंग्स ओनली बिकॉज दे आर कमिंग अप विद नंबर ऑफ कीज, ऑलमोस्ट मोर देन 60-70 यस आराम से। तो वो एंड ऑफ द डे दे आर सेलिंग इनटू वेडिंग्स ओनली। दे कैन नॉट गिव अ टच ऑफ अ बुटीक पैलेस और अ हवेली और अ हेरिटेज थिंग, दे कांट। वो बना उसको वैसे लें बट दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट। So what is the feel, sir? So if someone goes to a real palace property or एक जो brand new palace property किसी ने बनाई है just to, we can say it fake palace property, और एक original it's a built up property, it is a built up और एक पुराना legacy property, क्या difference आता है इन दोनों में? If someone doesn't want to do a wedding or something, मतलब difference as in terms of what? in terms of the guest experience. So अगर एक मैं सपोज एक लेगेसी पैलेस में जाता हूँ, हाँ तो आई टेल यू, आप अंदर घुसते ही गेट से ही आपको एक डिफरेंस पता पड़ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टाफ के एटीट्यूड में, इफ यू आर गोइंग टू अ ओरिजिनल हेरिटेज प्रॉपर्टी, उसकी स्टाफ की बॉडी लैंग्वेज में ओनली, बिकॉज दे टॉक हेरिटेज, दे वॉक हेरिटेज। अब वो उसको वॉक को आप नेगेटिव में भी ले सकते हो कि भाई वो वॉक स्लो कर रहा है, बट वो हेरिटेज है, वो हेरिटेज है। करेक्ट। Whereas if you go to a built up property, वहाँ पे उसकी walk fast होगी तो that is not heritage. He's a professional. वो आत्मा होती है heritage property की। सही बोला आपने, बिल्कुल सही। I think this is the best way to explain. वो there is a soul to that property. We talk heritage, we live heritage. We know. And सर मैंने employees को भी देखा है। और यही चीजें बहुत छोटी चीजें बट इसका impact बड़ा होता है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ये लाइन बहुत बड़ी इम्पैक्ट है। मतलब मेरे को अगर आज के बाद कोई पूछेगा कभी कि क्या डिफरेंस होता है, मैं ये बता पाऊंगा that प्रॉपर्टी हैज अ सोल, यू कांट जस्ट टेक इट अवे। जो and you can't express in words also, of course you can't express। आप जाके ही उसको एक्सपीरियंस करो तब आपको पता पड़ेगा कि हाँ वो उसमें एक वाइब थी। करेक्ट। सो मैं अभी जब शाहपुरा हाउस की बात करता हूँ, मैं तीर तलवार देखता हूँ तो आई नो दिस इज फ्रॉम द एरा, नॉट समवन हैज गॉन एंड बायड इट। अगर मैं खरीद के भी ले आऊंगा तो मुझे उसकी वैल्यू नहीं होगी कि इससे क्या हुआ। एंड यू कैन टेल ये प्रशांत ये तलवार ग्रैंडफादर, एंड देन इट हैज अ स्टोरी बिहाइंड इट, एंड दैट स्टोरी इज सोल ऑफ दैट एंटायर प्लेस। वो नया बनाते समय आपको नहीं मिल सकता, या आप नया बना के उसको 200 साल जब तक आप उस चीज को इनहेरिट नहीं करोगे तब तक आप उसको उस हिसाब से पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे, प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। आप उसको खरीदोगे तो वो आप उसको लगाओगे भाई हाँ मैंने खरीदी है इसलिए मैंने यहाँ लगा रखी है। पर आप उसको इनहेरिट करोगे तो आप उसको तरीके से प्रोजेक्ट करोगे एंड आप उसको देखोगे उसी तरह से। वेरी ट्रू। सो पैलेस से बाहर आते हैं सर, हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, व्हेन इट कम्स टू एंटायर ऑफ दिस सेगमेंट, यू नो व्हाट वी कॉल एज लेगेसी होटल्स, यहाँ पे एम्प्लॉयज वर्सेस एक होटल के एम्प्लॉयज में क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज मैं आप इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने शाहपुरा में देखा है, मैंने बहुत सारे पैलेस प्रॉपर्टीज में देखा है, व्हेन यू गो इन this entire body language to the way that they talk, and sometimes they are not even IHM graduate, and they are someone who is folk Rajasthani and people, local people, who is delivering the hospitality what Rajasthan has to offer, not that IHM has taught. See, Prashant, let us first आपसे मैं पूछूं व्हाट इज हॉस्पिटैलिटी ओनली। मतलब मेरे हिसाब से हॉस्पिटैलिटी तो एक मेहमान नवाजी है। करेक्ट, जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है। एक आदर है, एक सत्कार है। करेक्ट, दिस इज व्हाट हॉस्पिटैलिटी। तो ये एक आईएचएम वाला स्टूडेंट से ज्यादा बेटर तो एक नॉन आईएचएम स्टूडेंट ही कर पाएगा। करेक्ट, बिकॉज आईएचएम स्टूडेंट वालों को तो बताया जाता है कि भाई हाउ यू हैव टू टॉक, स्टैंड और वॉक आल्सो, शेक हैंड, डिलीवर। सो दीज थिंग्स आप इसको एक हेरिटेज वाले उसमें सेगमेंट में डालोगे तो वो चीज बिगड़ेगी। We also don't have any IHM pass out students, और कभी बुलाया होगा तो they cannot stay for longer because उनको तो माहौल ही पसंद नहीं आता, because they want professionalism which is not there. Yes. So आपके पास ज्यादातर आपके local staff है। Yes, we train them most in Shahpura house. I think most of the staff is almost 15 years, 15 साल से ज़्यादा स्टाफ। जब हम यहाँ when we were in school, so we used to कभी कभार रिसेप्शन में चले जाते थे अंदर देखने के लिए तो भाई कैश बॉक्स में क्या है, तो वहीं से हमारे को बाहर भगाते थे वो कि नहीं आप यहाँ नहीं आओगे। अब वो स्टाफ को हम जब उनसे बात करते तो हमारे को किससे बताते हैं कि अब तो आप हमारे को डांट रहे हो, उस टाइम तो हम आपको डांट के भगा देते थे कि आपको अंदर आना ही नहीं है। मतलब यू नो दैट
the तब से time हैं period, वो। हाँ time period, so that is good. They are like a family. पर They are इससे like a सर family. मेरे को एक बड़ा डर दिखाई देता है इस सेगमेंट में, बिकॉज राजस्थान व्हेन इट कम्स इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट हैज टू ऑफर। सो राजस्थान में चाहे मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करूं या फॉरेनर के विजिट्स की बात करूं, जयपुर या फिर राजस्थान कंप्लीटली हैज अ डिफरेंट वाइब ऑफ हॉस्पिटैलिटी अपार्ट फ्रॉम इंटायर ऑफ द इंडिया। एंड जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे होटल्स खुल रहे हैं, जैसे हमने अभी बोला कि आप ये वाला जो सेगमेंट है ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यू कैन गेट इन पैलेसेस जहाँ पे वो आज भी आदर सत्कार है, जो रिस्पेक्ट है, एंड देयर इज द वे दैट दे ट्रीट यू, वो आपको एक बने हुए होटल या फिर नए जितने भी होटल्स खोल रहे हैं उनमें नहीं मिलता। धीरे धीरे करके ये लोग भी खत्म हो रहे हैं। आई थिंक ये ट्रेडिशन को कोई जिंदा रख रहा है या नहीं इस पूरे राजस्थान में। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग जो इनहेरिट करके बैठे हुए हैं, वो अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे कमर्शियली, तो वो चीज़ खत्म ही होगी। फिर आप जैसे नए ब्रांड्स आके नई बिल्टअप हेरिटेज प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो कल्चर अलग सेट कर रहे हैं। करेक्ट। ये जो हेरिटेज, जो एक एसोसिएशन है, जो हमारी इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन, जिसके अंदर कुछ लिमिटेड होटल्स हैं जो ओरिजिनल हेरिटेज हैं, तो वो कम है। और आई एम श्योर जो अदर होटल्स which are modern and they are built up heritage properties, they are more in numbers. सो आप लोग क्या कर रहे हो सर? देखो, प्रॉपर्टीज तो आप सरवाइव कर लोगे बिकॉज दीज आर लेगेसीज एंड यू विल मेंटेन दीज प्रॉपर्टीज। आप इन एम्प्लॉयज को कैसे मेंटेन करोगे? बिकॉज मेरे ख्याल से इन प्रॉपर्टीज की आत्मा ये एम्प्लॉयज ही है, द सोल दैट वी टॉक Definitely. अबाउट Yes, यही है, yes. ये हमें फील कराते हैं लेगेसी। Yes. बिकॉज व्हेन आई कम टू योर होटल, देयर इज अ वे दैट द थिंग्स हैज बीन ट्रीटेड, और वो आपको एक 5 स्टार होटल में नहीं मिलती है। पानी देने के तरीके से लेकर के, सो इट इज नॉट एन IHM वे ऑफ गिविंग वाटर व्हाट यू गाइस आर फॉलोइंग हियर, बट वो लगता है दैट मैं वाकई में पैलेस में बैठा हूँ जो मुझे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सो ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, तो आज आप ये कर सकते हो नए होटल में आप उनको बहुत पैलेसियल प्रॉपर्टी में आप अच्छी सी ड्रेस शेरवानी पहना दो, बट दे विल नॉट बी एबल टू इम्बाइब द वाइब और कल्चर ऑफ दैट लोकल वेसल्स। तो इसके लिए कुछ कर रही है एसोसिएशन, हेरिटेज एसोसिएशन इसके लिए? नहीं, वी आर ट्राइंग टू टेल इन द एसोसिएशन के जिनके पास होटल्स हैं and who are not willing to do anything, so better they give it on lease or some other module, so that the heritage term, that this heritage is still alive. The original heritage properties हैं, and who are people who are having the properties and not doing anything, so we are requesting them to give it to someone, maybe a brand, a company, to run it professionally, so that वो उस प्रॉपर्टी का लोगों के सामने पता तो पड़े वो है क्या, what is the place where the property is, वो जगह क्या है, उस जगह की वाइब क्या, डेस्टिनेशन क्या ऑफर करता है. That also matters a lot. See, apart from the Haveli or the palace, the surrounding is also very important. Correct. अगर आप शाहपुरा की बात करें, so when we started the Haveli over there, so I used to do a walk with the guest. मैं walk पे लेके जाता था for sightseeing. Okay. So that time I also didn't know that the manufacturing of a bangle is being done in Shahpura, because मैंने तो कभी चूड़ी बनते हुए देखी ही नहीं है, सिर्फ खरीदी है, पता पड़ता है कि वो एक बैंगल रखी हुई उसको आप खरीद लो, बट हाउ इट इज मेड, दिस आई हैड सीन फर्स्ट टाइम इन शाहपुरा. पूरा मनियारों का मोहल्ला है, वहाँ चूड़ियाँ बनती है और घरों में बनती है, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. आपके कलर के हिसाब से वो चूड़ी बना के हाँ, मल्टी कलर, सिंगल कलर, आपके साइज के अकॉर्डिंग, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. So I think this culture has to be saved. I think culture has to be saved and shown. Has to be shown. So लोकल लोगों को सर आप प्रमोट करते हो जिस तरह से कि आप IHMs के लोग कम हैं, लोकल लोग ज़्यादा हैं, इसलिए आपका वो हेरिटेज टच भी है. So बाकी होटल्स भी ये कर रहे हैं लोकल लोगों को सपोर्ट यहाँ पे, या फिर I mean, you're talking about other brands? Quite a number of hotels are doing this, especially the hotels which are placed in offbeat areas. So they are doing that because वहाँ पे उनको करना ही है, क्योंकि when the guest is going to their property, so they have to offer some experience. So everyone is doing a village walk, और वहाँ पे उनका जो खुद का experience है, local experience, whatever it is, so they are showcasing that. So अगर आप अपनी शाहपुरा की बात करें, so we are doing a lot of festivals, okay, where the families involved. So हमारा दिवाली, होली, these two festivals are very famous in the inbound market and the foreigner market. Okay. हाँ. So that's a showcasing of our festival to the outside. To the outsiders, yes. कि how a family, a royal family, they celebrate.
festivals in their country. And you guys also get involved? Yeah, we ourselves involved. In Diwali में पूजा होती है, लक्ष्मी पूजन जब होती है, so we all dress up in our attire and we do a puja with them. So we the gents we give them turbans, ladies we have saris. Okay. So पूरा attire proper, we make a whole event out of it, so which is very good. Apart from selling rooms, food, so these are the things which they'll remember lifelong. कि भाई वहाँ गए थे, वहाँ एक फेस्टिवल मनाया था. आज अगर अपन भी उनकी कंट्री में जाएं और एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें, so we'll remember that. Yes, of not course. the place where we stayed. So that is very important. वो मूवी में था ना सर, एक ऋतिक की मूवी में वो टमाटो वाला फेस्टिवल था, उसके बाद से वो बहुत फेमस हो गया इंडिया में, just because that was a festival in outside country. And that festival only everyone remembers when we remember that movie. Yes. अभी भी आपने उस मूवी को फेस्टिवल से ही आपने करा, अभी तक नाम तो मेरे को भी रिकलेक्ट नहीं हो रहा उस मूवी का नाम क्या था. मुझे भी नहीं याद आ रहा, but I think that festival was the thing that clicked. So आप compete कैसे करते हो सर एक अपकमिंग डेस्टिनेशन से? जैसे जयपुर इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राजस्थान बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, so there are different kind of guests which is coming in. True. And there are different kind of expectations. Yes. और वो आपको किसी होटल से ही कंपेयर करते हैं, जब भी करते हैं तो खाना से लेकर एवरीथिंग इज कंपेयर्ड विद टॉप नॉच 5-star होटल इफ यू आर स्टेइंग इन अ लेगेसी होटल. तो ये कैसे हैंडल करते हो सर आप? जो हमारा शाहपुरा हाउस का जो यूएसपी रहा हुआ है, हम वी ट्राई टू मेंटेन दैट ओनली, एंड व्हाटएवर वी आर डूइंग इट वी डू इट इन द बेस्ट ऑफ द मैनर. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला व्हाट वी हैव टू डू इट. एज आई मेंशनड यू दैट जो हेरिटेज होटल्स हैं who are doing the business of the inbound guests are very limited now. Correct. Everyone has changed their module. So no one wants to go to a place where a wedding is happening and where the guests are also staying. Correct. That is quite disturbing. Correct. So उस module के अंदर there are very less number of hotels now. So you have a niche client which comes. We have a niche client, and we don't want to disturb that. So that is the reason now we have now reduced the number of weddings also. This was only in COVID when we had no option, so we had to do weddings, but now we are not. So it's good. I think this idea is nice that I have realized this right now. That if you will want everything, you will attract a lot of problems. But Correct. if you will keep it simple, that listen, this property is a heritage property, ये इन्हीं लोगों के लिए है, और वो आपके लिए सदाबहार है, और वो आपको हमेशा खुश भी रखेगी. क्योंकि आपको पता है कि जयपुर, दिल्ली, आगरा के गोल्डन ट्रायंगल है. तो जयपुर का तो कभी भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी ये सिटी नीचे तो नहीं जाएगी, ये तो ऊपर ही जाती रहेगी. करेक्ट. इंडिया में सर इंटायर इंडिया विल गो स्टार्ट गोइंग अप. हेरिटेज की बात करें, ओरिजिनल हेरिटेज, वो तो बनने से भी नहीं रहे. हाँ. तो उस चीज को अगर आप देखें तो उसके अंदर आपका जो एक मॉड्यूल है, आपकी जो यूएसपी, जिससे आपका जो ये स्टार्ट हुई थी जर्नी, उसी को अगर आप मेंटेन रखें और उसी के अंदर आप जो भी चेंजेस हैं प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे लाते हैं, तो उसके अंदर दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस. सो मुझे आज मैं बहुत दिन से पॉडकास्ट कर रहा था, एंड देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई गॉट फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल. तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि बुटीक होटल्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में. और दूसरा कि देयर आर लोकेशंस, या आप ये समझ लो, या कि देयर विल बी डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ accommodation and hospitality which open. जैसे हमने जंगल सफारीज की बात करी, this will grow. Nature will grow. Yes, nature will grow. People are now going towards nature. So एक चीज और है जो मुझे आज ऐड ऑन हुआ है आपकी बात से, legacy will also grow because you cannot create legacy in coming world. You cannot. So I think the future of any brand which deals in legacy is bright. So and I would I'm say looking that at Shahpura to become. So आप इस legacy को कहीं भी लेके जा सकते हो. True. In any of the place in the world, because all you know is how to treat. True. Because now this becomes a place, and the feeling that I get of legacy is because of your employee, the kind of setup that you do, how you build the property. I think this can grow leaps and bounds apart from India to other countries as well. Are you planning to go outside India as well? Outside India, as of now, we are searching for a property. My brother he's gone to Dubai. So he had shortlisted a property over there. So the things are going on. Nothing has been finalized as yet. Okay. अभी वो उस टाइम गए थे तो देखा था. So Dubai is also a very good place. Yes. To do business. It is. So I'm sure Dubai would be a nice, but I think there will not be a heritage over there. It will be again a contemporary. Yeah. A modern hotel. But, because
there is nothing heritage as There is such nothing left. like that. There is only largest, biggest. हाँ, that वो benchmarking में खेलते हैं सर. नहीं, that is a different thing. मतलब हाँ. दुबई में तो अभी कुछ सालों में they have Yeah. done a Next is Saudi Arabia. They are tourism में coming. तो they have done Entire wonders. GCC is coming up with this because maximum land तो सर रेट था and the government have realized कि land का value बढ़ते ही जाएगा क्योंकि ये तो कभी नहीं बढ़ने वाला. Fixed thing on the planet Earth is land, वो कल सुबह नहीं बढ़ रही है. And which means आपके पास जिस भी देश के पास जितना भी land खाली पड़ा है उसको इस्तेमाल करना ही करना है. So all the countries which has lot of vacant land will start growing unless there is an environmental crisis like Greenland. True. So Shahpura, we will see in future to grow outside India to become international brand. Yes, definitely. Why not? कोशिश तो यही रहेगी कि इंटरनेशनल भी एक प्रेजेंस हो. इंटरनेशनल भी प्रेजेंस होना जरूरी है. एक इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम है सर. आई थिंक आई डोंट नो इफ मैं पॉलिटिकली करेक्ट बोलूंगा या नहीं इसको. हम इंडियन ब्रांड्स को हम इंडियंस खुद सपोर्ट नहीं करते ज़्यादा. इसका एग्जांपल देना चाहूँगा आपको. आई वर्कड विद मैरियट. तो मैं मैरियट में नौकरी करता था. आई वाज अ प्राउड पर्सन कि मैं मैरियट में नौकरी करता हूँ. सो हायर्ड ने मुझे पहली बार दुबई भेजा था फॉर a strategy meeting and I was came back. I was talking to all of them. They're saying जितने मेरे दोस्त लेमन ट्री, ओबरा या ताजमहल हायर्ड ऐसी कंपनी आपको दुबई भेजती है. And we were bragging about it. And then later on my stage when my 30s came in, when money was not the issue for me, so मैं मैरिड में नौकरी करते हुए सोच रहा था कि मेरा जीएम इंडियन है, मैं इंडियंस हूँ, यहाँ पर रहने वाले इंडियंस है, खाना बनाने वाले इंडियन, जो खाना खा रहे हैं गेस्ट वो भी इंडियंस है, और आपके रेस्टोरेंट का नाम भी इंदौर किचन है. उसके बोर्ड जो है बाहर वो मैरिट का है, विच इज इंटरनेशनल ब्रांड. एंड देन सडनली आई स्टार्टेड स्टडीइंग ऑल मोर एंड देन आई रियलाइज कि इंडिया में आए हुए इनको 10-11 साल हुए. दे हैव क्रॉस 100 होटल. नाउ दे आर रीचिंग 250 होटल्स वेरी सून. वो अभी नरेंद्र मोदी से मिल के गए. दे आर इन्वेस्टिंग मोर. एंड वेयर एज व्हेन इट कम्स टू ब्रांड, मैरिट हैज ह्यूज वैरायटी ऑफ ब्रांड. 30-40 ब्रांड्स हैं उनके पास. सो वो आपको ये बोल सकते हैं आपको कैसा होटल बनाना है. सो अभी उन्होंने एक रिसेंटली एक और ब्रांड लिया है, न्यूज़ में आ चुका है, which is lower than Fairfield. Okay. They are going lower to than Fairfield. Lower than Fairfield, which means आप कोई भी होटल बना रहे हो, उनके पास एक कैटलॉग है, आप उंगली रखो वो ब्रांड आपको मिल जाएगा. यू आर मेकिंग दिस 200 करोड़ का होटल, ये वाला ब्रांड लगा लो. आप 800 करोड़ का होटल बना रहे हो, ये बना लो. आप 15 करोड़ का होटल बना रहे हो तो आप ये लगा लो. And I realized that no Indian brand combined together has array of brand that they can put in. So Taj has limited, you can count it on one hand. So does Oberoi's, so does Lemon Tree. So either the acquisition has to happen, which means the bloodbath of acquiring brand will happen in India. One. Second is that this international brand will grow so much that we will not be able to compete them. So I think India as a whole, a citizen and also the hospitality segment has to think about Indian brand more. So if I have to choose some tomorrow that where I have to stay, I will choose Indian brand over any other brand. Because we are deliberately giving money to them and they are becoming powerful in our country. That doesn't happen in China. That doesn't happen. Okay. So what is your thought on this कि ये इससे कैसे बचा जाए? Because either someone has to do about things about this entire issue, or we have to start realizing that this is going to come for us. This is a threat. For me it is. No threat in what terms? कि भाई they are expanding in so much. Yes. So they will have a monopoly, sir. So they are. हम उनसे बचे हुए चीजों में ही बिजनेस करेंगे. So मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. So they're compelling the customers to book their hotels only because of course inventory, it's a power of inventory, sir. So imagine that इंदौर में एक होटल था Marriott, then they came up with Fairfield, then they came up with Sheraton. If the occupancy level demand goes up of the city, they will come up with another hotel. Now if you have to do a wedding, आप आते हो, आप Marriott में बैठते हो और वो आपको बोलते हैं सर आपको 2,500 रुपये वाला कमरा चाहिए तो आप फेयरफील्ड चले जाओ. आपको 3,500-4,000 वाला चाहिए तो आप मैरियट आ जाओ. अगर आपको 7,000 वाली शादी करनी तो आप शेरेटन चले जाओ. दिस अ पावर ऑफ इन्वेंट्री एंड मैरियट एज इंटरनेशनल ब्रांड लेगेसी है उनके पास. एंड इंडियंस राइट नाउ वी आर मोर प्रो टू इंटरनेशनल ब्रांड बिकॉज हम वो कंट्री थे जहाँ पे हम कुछ बनाते नहीं थे सर, और अभी हमने बनाना शुरू किया है अब. और अभी पूरे कंट्री का माइंडसेट वही है दैट इंटरनेशनल ब्रांड्स आर बेटर एंड बेस्ट. अभी तक हम अपने ब्रांड्स को टाटा की गाड़ियों पे भरोसा अब हमने करना शुरू किया है. इसके पहले हम हुंडई और बाकी पहले टाटा का एक अलग माइंडसेट था. हाँ, टाटा नाम आता था. करेक्ट. हमें ट्रक समझ में आता था. पर आज अगर हम देखें तो ये अब बदल रहा है, पर इसको बहुत समय लगेगा. और हॉस्पिटैलिटी में ये और स्लो है सर.
नहीं बट इसको अगर आप इस पॉजिटिव वे में लें तो इट इज अगेन अ गुड साइन आल्सो इफ दे आर एक्सपैंडिंग सो मच एंड दे आर कमिंग अप so many hotels, so they are creating a market. They are creating market because When India they're has already creating a become market, so any person with good investments can invest in that particular city or next to that hotel where these guys correct. are coming. So I think And why to stop them? I think It's better to what they are doing. Do it it's in not about smaller scale. it's not about stopping them. It's about us realizing that they are not stopping. They are not stopping, and we need to do something. We For have our to be own quicker country. and faster. I think So that's we the need to thing. look for investors who can invest simultaneously with their Correct. Places where they are investing. Correct. So I think आपको किसी डेस्टिनेशन को चलाने के लिए यू नीड मंडी, एक कहते हैं ना मंडी होना बहुत जरूरी है. correct. एक सिंगल होटल एक डेस्टिनेशन पे नहीं चल सकती. आज जब जवाई, आप आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द जवाई एज अ डेस्टिनेशन. तो जवाई जब स्टार्ट हुआ तो दैट टाइम इट वाज ओनली सुजान्स प्रॉपर्टी. जवाई द फर्स्ट वन. That time there was the place was not that known as a destination. But जब वो leopard sighting हुई, people started going, investing, and now you've got brands over there. You've got Clarks भी है, Sheraton, ये आपका वो Welcome Heritage है, Ananda, everyone is there. So now the business is there. So destination को एक business point of view से देखने के लिए वहाँ मंडी बनाना बहुत जरूरी, market होना बहुत जरूरी है. तभी travelers को लगेगा कोई option है, वो जगह अच्छी है. आई थिंक हम थोड़ा लेट हैं हॉस्पिटैलिटी एज अ सेगमेंट को समझने के लिए बिकॉज हम टू मच इन्वॉल्व हैं हॉस्पिटैलिटी एज अ हेरिटेज संभाल के रखते हैं. हम अतिथि देवो भव को हम बहुत संभाल के रखते हैं. हम कैपिटलिस्ट थे नहीं शुरू से. इंडिया वाज नेवर कैपिटलिस्ट एज अ कंट्री. पर हम जिसे ये बोल रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे है, इंडिया इज ऑलरेडी अ मार्केट एंड दैट इज द रीजन इंटरनेशनल ब्रांड इतनी तेजी से आ रहे हैं. यू टॉक अबाउट एमजी टू एनी ब्रांड, एवरीवन वांट टू कम इन इंडिया. हम 125% इंपोर्ट ड्यूटीज देते हैं फॉर इंटरनेशनल कार्स टू कम इन, पर हम बहुत सारी इंटरनेशनल गाड़ियाँ खरीदते हैं. एंड बहुत जल्दी ये सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे आके सेटअप भी करेंगे, विच मीन्स इंडिया इज ऑलरेडी अ मार्केट. हमें रियलाइज थोड़ा लेट हो रहा है. लाइक यू हैव स्टार्टेड एक्सपैंडिंग योर बिजनेस एंड आई एम श्योर ट्रबल रही होगी, पर एक्सपेंशन हुआ है सर. हुआ है, यस. And this realization should go on to every hotelier who's going to be tomorrow coming into this industry. People who have got funds and properties with them and they are not doing anything. Yeah. So for them it is a lesson that they should also do something. The problem with this industry that I realize and I'm trying to solve this is that we don't talk. We don't talk. In this industry people don't talk to each other. So अगर कोई दूसरा ओनर होगा, मैं आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से बता दूं क्योंकि मैं वहाँ 14 साल नौकरी करके आया हूँ. सो अगर मैं मैरिट में काम कर रहा हूँ और आप सायाजी वाले हो, आप वहाँ खड़े हो, आई विल फील इंसल्टेड अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरे दोस्त बोल रहे हैं सायाजी वाले से क्या बात कर रहे हैं. वी थिंक उनका IQ नीचे है, जबकि इफ यू लुक एट द ट्रेट ऑफ अदर थिंग्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल IT, वो बात करते हैं सर, हम बात नहीं करते हैं. ये हमारे थोड़ा सा हेरिटेज वाले में भी है, जो हमारे हेरिटेज हर जगह है सर. होटल ओनर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा रहता ही है. इनफैक्ट हमने एक पॉडकास्ट किया था एक लेमन ट्री के सेल्स के साथ एंड ही आल्सो सेड द सेम थिंग. सो वन थिंग इज वेरी कॉमन इन ऑल ऑफ माय पॉडकास्ट. दिस इंडस्ट्री इज ब्यूटीफुल फॉर इंडिया, इट्स मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट जस्ट बिकॉज वी आर नॉट सिनर्जाइज्ड टुगेदर, समवन एल्स इज मेकिंग प्रॉफिट मोर देन व्हाट वी शुड बी मेकिंग. हम यहाँ होने के बाद भी इसमें पैसा नहीं बनाते, जबकि बाहर के ब्रांड बहुत बना ले जाना है. And they are so. What was the reason to come below a brand than Fairfield? Because the market is huge. Market is huge. That for that segment. That segment true, huge. True. So I think this is something that I want to solve, and that was reason ये podcast शुरू करने का reason भी यही था. Okay. कि yeah, I'm sure this podcast, I mean, you'll help us also in when we are seeing the hotels, when we are finalizing the hotels. So you could also let us know, help us when we are finding a hotel in a particular city. So आप बता सकते हैं कि भाई उस एरिया का क्या अभी नीड है and what hotel we should invest in. इस podcast के बाद अगर कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, he can get connected to you and you can guide him very well that बनाते समय आप ये कर लो, probably this will help you better. I would not be a better person. True. You are born here, you know Rajasthan better than anyone. True. And if you are not, people are not getting connected to, it's their fault. You are available, you are talking to me and you are ready to talk to anyone. See, the point is everyone is ready to talk. They don't have a platform and no one has given them. True. So all I've seen is हमने जितने भी पॉडकास्ट देखे, everyone is a known person, personality आते हैं, and they already have experienced so much in life that we can only look at them as an idol.
इनके जैसा बनना है. I wanted to reach out to people who are inspiration, who is work in progress. Work in progress. And those are the real people where you can reach out to them and ask, how are you doing? Can you tell That's me more that? practical. That's more practical because for them the life was different. They have reached somewhere. We are the real people struggling in the real life like others. For them, for them to do a podcast is some different reason. आपके लिए एक अलग reason है. Yes. And which is good. Yeah. Which is good. So we are coming up with the app called the Aaron, and this platform is basically bringing everyone from hotel industry at one place to be a vendor, be a student, employee, hotel owner, or anyone who is interested in hospitality can be a part of it and can connect, talk, and use the best case scenarios of this app. So we are launching very soon, in next 10-15 days. And our journey through this podcast is bringing everyone on one place. And that's the tech that we are providing for everyone to be at one place. Okay. And I had a lovely time talking to you, sir. Same here. Thank you so much for the time. Thank you so And मुझे लगता है कि हमें और ऐसे discussion podcast करने चाहिए. Yeah, definitely. And I would love if you can Podcast. recommend few people. Definitely, I will. जिनको interest है, जिनके पास knowledge है इस field की. And then I want if you can. So आपका podcast देख के अगर 4 लोगों के भी mindset बदलते हैं for this industry, it will be a great help for the entire of a hospitality of India. Yes, definitely. That should be done. And the next time, agar we are doing a podcast, we should do it at some other place also, some other venue. Yes. So that we are offering, क्योंकि उस जगह की vibe आएगी तो फिर उस हिसाब से वो podcast भी जाएगा. Yes, I think that's the way that I'm traveling so much because of this, because मैं जयपुर में आके जयपुर की vibe के साथ आपके साथ बैठा हूँ. Thank you, sir. ठीक है प्रशांत जी, thank you so much. You are watching biggest hospitality podcast by a hotelier. Stay tuned. Follow us for more.